Hello everyone. The topic for today's session is letters and its type. What is letter writing? A letter is a written message that can be handwritten on a printed paper. It is usually sent to the recipient via mail or post in an envelope. Although this is not a requirement as such, any such message that is transferred via post is a letter, a written conversation between two parties. So what is a letter? A letter is a written message that can be handwritten or printed on a paper. एक लेटर एक ऐसी चीज होती है, एक मैसेज होता है जो कि हम हाथ से लिख के भी सेंड कर सकते हैं या फिर उसको प्रिंट करके किसी पेपर पे भी भेज सकते हैं. It is usually, basically it is called a letter. It is basically made विद द हेल्प ऑफ पोस्ट. हम पोस्ट के द्वारा उसको इधर से एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. बेसिकली अगर शुद्ध हिंदी में इसको समझा जाए तो ये एक कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप, एक बातचीत है दो लोगों के बीच की. बट अगर हम आज की तारीख में कंपेयर करें तो अर्लियर वी यूज टू राइट लेटर्स अ लॉट, यूज टू यूज दिस टेक्निक अ लॉट. बट नाउ दैट ईमेल्स and text and other such forms have been the norms for communication, the art of letter writing has taken a backseat. However, even today a lot of our communication, especially formal kind of communication, is done via letters. Whether it is a cover letter for a job or the bank sending you a reminder or a college acceptance letter, letters are still an important mode of communication, which is why it is important that we know the intricacies of letter writing. So basically आज जहाँ तक लेटर राइटिंग की जगह ईमेल्स ने ले रही है, हम लोग ज़्यादातर ईमेल्स यूज करते हैं. मगर आप अगर फॉर्मल कोर्ट्स में आएंगे, फॉर्मल काइंड में आएंगे, तो आज भी कॉलेजेस या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आज भी प्रिंटेड लेटर्स यूज करती हैं. दे यूज द एनवलप, दे ट्राई to use the post to send the messages from one because it looks so formal and the technique is still being used today. आज भी हम वही टेक्निक यूज करते हैं, हर जगह नहीं मगर जो बेसिक जगह है लाइक ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो आज भी इसी चीज़ को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का अगर आपको जॉब इंटरव्यू के लिए चाहिए तो कंपनी जब आपको कॉल लेटर भेजती है तो वो एक प्रिंटेड फॉर्मेट में आता है, एक एनवलप के अंदर आपका कॉल लेटर होता है and it comes with the help of post. So we move to the next topic, which is the types of letters. So how many types of letters are there? Basically there are two kinds of letters, formal and informal. But other than these two types, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो basically formal है और informal है. But उसके अलावा भी कुछ letters होते हैं which are business letters, official letters, social letters, circular letter, employment letters. So basically we will read out first formal letter and informal letter. Formal letter. These letters follow a certain pattern and formality. They are strictly kept professional in nature and directly address the issues concerned. Any types of business letter or letter to authorities falls within this given category. So exactly what it is, जब भी हम formal itself is a word. Formal एक formal तरीका, एक सही तरीका, एक official तरीका, अगर हम सही मायने में इस word को समझे तो basically officially we use these kinds of letter. Like कोई प्रोफेशनल केस है, बिजनेस लेटर्स है, लेटर्स अथॉरिटी के लिए भेजा जा रहा है किसी के लिए. एंड इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं. लाइक हम किसी भी तरीके से उठाया लेटर, लिखा और भेज दिया, नो, वी कैन नॉट डू दिस. वी हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट टू ओबे, एक्चुअली टू फॉलो. फॉर्मल लेटर, लाइक इन द वेरी स्टार्टिंग वी यूज सेंडर्स एड्रेस, देन द डेट्स कम, रिसीवर. सो लाइक वी फॉलो अ पैटर्न. We use salutations, we use subject, we use the body of the letter, then we use concluding point, then we actually finish the letter like your faithfully, your truly, these kind of things. So basically we are using a proper format. हम लोग एक तरीका यूज कर रहे हैं इस चीज को फॉलो करने का, एकदम से अनएडुकेटेड वे यूज नहीं करते फॉर्मल लेटर्स. Whereas if we comes and talk about informal letters, these are very personal letters. They need not follow a format, any pattern, a proper pattern. So these are personal letters. They need not follow any set pattern or adhere to any formalities. They contain personal information or are written
और अ रिटन कन्वर्सेशन। लाइक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम लोग मतलब क्लोज पीपल्स को लिखते हैं। लाइक इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, acquaintances and relatives। लाइक हम अपने दोस्तों को, जान पहचान के लोगों को, and we use it for the relatives as well। तो we use all these kinds of letter, informal letter for very close person जो उनको हम बहुत closely जानते हैं। तो these are the two basic types which we will study and which we will write in our syllabus। But let's have a look on the other types as well। Business letters. This letter is written among business correspondence, generally contains commercial information such as quotations, orders, complaints, letters for collections। Such letters are always strictly formal and follow structure and pattern of formalities। Business letters भी formal letters के अंडर आते हैं and we use it, अब we use a formal तरीका, एक ऑफिशियल तरीका इसको यूज करते हैं, एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। लाइक कोई ऑर्डर प्लेस करना हो, कोई कंप्लेन करनी है कंपनी के अगेंस्ट, कुछ क्लेम करना है। लाइक इफ यू हैव एन LIC and you did not get the claim back, so you can claim a letter ताकि आपको जो पैसा है आपका वो मिल जाए। तो all these kind of queries and information are being done with the help of business letters। Now it comes with official letter। This type of letter is written to inform offices, branches, subordinates or official information। It usually relays official information like rules, regulations, procedures, events or any other such information। Official letters are also formal in nature and follow certain structure and decorum। So main चीज है कि official letter भी formal letter होता है। We actually follow the same format as we use for the formal letters। एक तरीका होता है और ये क्यों किया जाता है। Like in an office, if you want to give some rules, write some rules and inform people about the regulations, तो वो एक proper procedure में जाएगा और लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। सोशल लेटर, a personal letter written on the occasion of a special event is known as social letter। Congratulatory letter, condolence letter, invitation letter etc. are all social letters। Like if we are putting up an invitation, अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की 50th मैरिज एनिवर्सरी है, वी विल इनवाइट पीपल, हम लोग उनको शादी की सालगिरह के लिए जो नोटा भेजेंगे तो एक सोशल लेटर है, पर्सनल फॉर्म में भेजेंगे जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होगा और हम क्लियरली कोई रूल्स एंड फॉर्मेट फॉलो नहीं करने वाले हैं। So this is social letter। The next is circular letter। A letter that announces information to a large number of people is a circular letter। The same letter is circulated to a large group of people to correspond some important information like change of address, change in management, the retirement of a partner। So this is again a kind of circular। Circular in the sense एक letter होता है जो लोगों के पास जाता है one by one, it moves in a circle। एक आदमी तो दूसरे आदमी के पास भी जाएगा, जैसे हम लाइक the same information is being delivered to all the people। वही एक information हम लोग सब लोगों को बताते हैं, inform करते हैं। And the last is employment letters। Any letters with respect to the employment process like joining letter, promotion letter or application letter। In very simple case, अगर हमको नौकरी चाहिए होती है तो रिज्यूम भेजते हैं, बायोडाटा भेजते हैं, एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि आओ हम लोगों को हमको इस कंपनी में जॉब चाहिए। सो वी यूज दैट ऑफिशियल वे टू एड्रेस पीपल टू इन्फॉर्म दैट वी आर इन नीड ऑफ अ जॉब, हमें जॉब की जरूरत है, और उस लेटर के थ्रू हम उस सारी इंफॉर्मेशन को क्लियर कर देते हैं और बता देते हैं। सो द नेक्स्ट टर्म comes under letter typing is the format of formal letter। What is the actual format of formal letter writing? Let's begin this। So the very first thing which we have to write the beginning of the letter, we will mention the sender's address। Sender's address मतलब वो इंसान जो लेटर भेज रहा है। Like I am applying for a job, तो मैं हूँ सेंडर, मैं हूँ वो जो लेटर भेज रहा हूँ, तो मेरा एड्रेस जो होगा वो सबसे टॉप पे आएगा। एट द लेफ्ट कॉर्नर, एट द लेफ्ट टॉप वी विल राइट द सेंडर्स एड्रेस, वो द भेजने वाले का पता। देन कम्स द डेट, जिस तारीख में आप वो लेटर लिख रहे हैं दैट विल कम, सो द डेट विल कम। देन जस्ट आफ्टर द थर्ड थिंग यू विल राइट इज रिसीवर्स एड्रेस। व्हाट इज हुज रिसीवर? रिसीवर जिसको हमने ये लेटर सेंड किया है, जिसको हमने भेजा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंडिंग माई जॉब एप्लीकेशन लेटर टू शशि इंटरनेशनल स्कूल, तो सेंडर हो गया मैं, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, मैंने लेटर भेजा, एंड रिसीवर इज द ऑर्गेनाइजेशन, द स्कूल, शशि इंटरनेशनल स्कूल। सो दैट इज व्हाट द रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर वो हुआ। देन
The fourth thing which comes after this is the subject. What the subject is. Now my subject is I am applying for a teacher's or a coordinator job here. तो subject क्या हुआ, ये हुआ कि मैंने जॉब के लिए ये लेटर सेंड किया है. सो दैट विल बी एट द टॉप. अब ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट इसलिए ताकि जब एक इंसान पढ़ना स्टार्ट करे तो वो पूरा लेटर पढ़ के आइडिया ना लगाए कि ये लेटर किस लिए आया है. सब्जेक्ट में ये मेंशन होता है कि ये लेटर किस लिए लिखा जा रहा है, तो इट इज वेरी क्लियर टू दैट पर्सन कि ये इस पक्ष में लेटर लिखा गया है, सो दैट ही कैन मेक अप हिज माइंड कि अच्छा ये लेटर इसलिए आया है. सो दैट ही कैन, लाइक यू हैव नंबर ऑफ लेटर, उसमें अगर आप सारे लेटर पूरे पढ़ेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. मगर अगर आपके सब्जेक्ट अगर मेंशन है आपके लेटर में तो आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. अच्छा हाँ ये वाला लेटर मुझे पढ़ना था, तो यू रीड द सब्जेक्ट, then you will start reading the letter if it is of your interest. Then just after the subject comes the salutation. Salutation, what is salutation? Salutation is that respect which will we get it comes of a word salute. तो salutation is sir और ma'am. जो भी आप करेंगे, आप किसी भी सीनियर या फिर किसी भी अथॉरिटी को अगर लेटर लिख रहे हैं, you have to show some respect to that person always. If it is not added, it means this is a personal question towards you. ये एक पर्सनल क्वेश्चन है आपके ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके एटिकेट्स के ऊपर कि you even don't respect the person. मतलब आपको वो चीज़ नहीं पता, एक नॉर्मल कैजुअल चीज़ नहीं पता है कि जब भी हम किसी सीनियर या फिर किसी रिस्पेक्टेड इंसान को एड्रेस करते हैं तो वी शुड यूज सर और मैम. यू शुड ऐड दैट. नाउ in front of sir, you have to respected or not respected, you can add it accordingly, because as we say sir almost is a respect. जब आप किसी को सर बोल रहे हैं तो सर उसमें एक रिस्पेक्ट ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं. तो यू कैन ऑल्सो स्ट्रेट अवे राइट सर और मैम. You can start beginning your letter now. Now after salutation, what comes is the body of letter. Body of the letter is what you are exactly going to write in the letter. लेटर मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद मतलब जो आप डिस्क्रिप्टिव वे में उस लेटर को लिखने जा रहे हैं, जो आपने सब्जेक्ट मेंशन किया था उसके बारे में आप क्या लिखने जा रहे हैं, दैट विल बी कमिंग नाउ. सो व्हाट इज इट? बॉडी ऑफ द लेटर में वो सब कुछ मेंशन होगा. लाइक इफ यू आर राइटिंग अ कंप्लेन लेटर टू अ कंपनी कि आपका ये गुड्स, ये प्रोडक्ट्स आपका खराब आया है, ब्रोकरेज है या फिर सड़ गया है, जो भी आपकी कंप्लेन है, यू विल मेंशन इन दैट बॉडी एवरीथिंग. Now after body of the letter comes the complimentary closing. The complimentary closing is like when you end a letter, you write some lines and say thank you or whatever you want to add it. So that's what complimenting your faithfully, your obediently, that's what the complimentary closing is. And just after that, sender's name, signature and your designations. At the last you will write your name. Sender मतलब आप जो लेटर भेज रहे हो उसका नाम, उसके बाद उनके सिग्नेचर्स, एंड व्हाट इज योर डेफिनेशन, आपकी पोस्ट क्या है, आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट है, आप एक टीचर है, फॉर्मर क्या कर रहे हैं. सो दैट विल बी योर डेजिग्नेशन. लाइक इफ आई एम लाइब्रेरी एंड आई एम आस्किंग एन ऑर्डर फॉर द बुक्स, सो आई विल एड माई नेम हरीश, देन आई विल कंप्लीट इट विद द सिग्नेचर, देन माई डेजिग्नेशन व्हाट आई एम एट अ स्कूल और अन ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज़ आप ऐड करेंगे. नाउ वी विल क्विकली रैप अप द थिंग्स with the description given in the below. The following points need to be taken into consideration while writing a formal letter. So what are those points we need to keep in mind always? A formal letter strictly follows the prescribed format for writing a letter. So if you are writing a formal letter, it should be completely obey and it should be strictly follow that the format of the formal letter जो अभी आपको describe किया गया है. Use of colloquial words, abbreviation and slang language should be restricted while writing a formal letter. हम किसी दोस्त या फैमिली या फिर किसी भी रिलेटिव को ये लेटर नहीं लिख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली हमको वो वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, वो एब्रिविएशंस यूज़ करने पड़ेंगे. कोई भी स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करना पड़ेगा कि अबे हो ये यार, मतलब वेरी कैजुअल अप्रोच जो होती है वो टाइप की अप्रोच नहीं होनी चाहिए. ओके आई विल सी एंड ऑल. These type of slang words or language are not to be used in this format. See, a formal letter must be precise and to be the point. The subject line is very important in a formal letter. आपकी जो subject line है वो बहुत important है. I said it. It's actually will the waste of time जो होने वाला है
वो बच जाता है। आप सब्जेक्ट लाइन पढ़ के आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो, उस चीज़ को समझ सकते हो कि अब ये लेटर किस बारे में है। अब फॉर्मल लेटर मस्ट बी प्रिसाइज, मतलब बिल्कुल पॉइंट पे होना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। लाइक यू ऑर्डर्ड अ वॉच, आपकी वॉच खराब है, तो आप ये नहीं करोगे ये कंपनी थी, मैं उस दिन सुबह पहन के घर से निकला था एंड दिस एंड दैट। यू विल बी स्ट्रिक्टली सेइंग द थिंग लाइक मैंने आपसे वॉच खरीदी, मैंने एक दिन पहनी, ठीक दूसरे दिन वो बंद हो चुकी है। सो यू विल स्ट्रेट अवे गिव द कंप्लेन एंड स्टॉप द थिंग। आप इधर उधर की दुनिया भर की कहानी डिस्क्राइब नहीं करेंगे उस लेटर में। सो इट शुड बी वेरी precised, it should be in a very precise manner, so that it should be very point, to the point, khatam baat. The format of a letter, formal letter is as follows, as I have already described. The address and contact details, the sender's address of the sender are written here. Include an email and phone number if it's required. आप email या फिर phone number add कर सकते हैं अपने address के साथ. Then leave a line. Then date. The sender's address after leaving one line space. Receiver address, the address of the recipient of the mail. Then leave a line. The subject of the letter, the main purpose of the letter forms of the subject. If it must be written in one line, मतलब एक line होनी चाहिए। Subject should be very important thing in a letter. और सबसे important चीज़ ये है कि वो 3 या 4 लाइन में नहीं होता। Subject is something which should be very short and prescribed to the format or to the purpose of letter. तो वो सिर्फ एक लाइन में आप describe कर सकते हैं, to the point जाएंगे। Then just after that you will write the salutation, sir, respected sir or ma'am. Leave a line and start the letter, the body of the letter. अब क्या आने वाला है? Body आने वाली, like whatever you want to mention in that letter, the description about your subject will be in the body. Then after the body you can use 1 or 2 or 3 paragraphs to make it more smart and to make it more look good, लुक इंटरेस्टिंग। तो आपको एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा, लाइक हैफेसेड वे में नहीं कि एक पूरे पैराग्राफ में सब कुछ भर दिया है। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दैट लेटर, हमने लेटर क्यों लिखा है। सर आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर सच एंड सच कंडीशन इन सच एंड सच फॉर सच एंड सच रीजन, तो वो आप लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ जब आएंगे आप डिटेल में उसको लिखना चलेंगे कि ये ऐसे ऐसे हुआ था एंड इट हैपेंड, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस टू यू। पैराग्राफ 3 में आप कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। अगर आपकी घड़ी या फिर वॉच खराब हुई है, आपका बुक का ऑर्डर गलत आ गया, तो आप लास्ट में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बोलेंगे कि सर इफ दिस हैपेंड आई नीड अ सोल्यूशन फॉर दिस एंड आई होप दैट दिस थिंग नेवर रिपीट्स, बिकॉज अगर ये बार बार रिपीट होगी तो हमारे रिलेशंस खराब होंगे एंड मार्केट वैल्यू खराब होगी। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स वी विल मेंशन while we'll conclude the letter. And in the very end you have done complimentary closing, yeah, you're thanking you, you're faithfully and this and that, whatever the examples we use, like you're truly, you're faithfully, you're obediently. We use such complimentary closing in a very different manners, like जहाँ जो सूट करता है वो उस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। Like in the very last when we finish the letter we use the sender's name, the signature and the designation. If you have any designation you can mention it. So this is the format of formal letter. Now we will have a quick review over informal letter example and a format. So as I've already described this and explained that in informal letter this is nothing so we have to be very strict about it, the format. Yeah, we have to use a particular format, like a format to use करना है, मगर आप इतना strictly को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब करोगे। इट इज वेरी कैजुअल अप्रोच। सो इफ वी व्हेन वी स्टार्ट इनफॉर्मल लेटर वी स्टार्ट विद व्हाट, योर ओन एड्रेस, जस्ट सेंडर एड्रेस। तो सबसे पहले आप एक सेंडर एड्रेस अपना ऊपर मेंशन कर देंगे, जिससे यू नो व्हाट सेंडर एड्रेस एक्चुअली मीन्स। इट मीन्स लाइक हमको पता चल जाता है लेटर की स्टार्टिंग में ही कि ये लेटर किसके द्वारा आया है, कहाँ से आया। बाय एड्रेस वी कैन एटलीस्ट हैव एन आइडिया दैट फ्रॉम हु इज द पर्सन हु रोट दिस लेटर टू अस, है ना, ये एक्चुअली कहाँ से आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द सेंडर एड्रेस, देन वी विल यूज डियर हैरी। लाइक व्हाट इज दिस, दिस इज लाइक अ सैल्यूटेशन फॉर्म जिसमें आप बड़े ही कैजुअल अप्रोच से फिर लिख सकते हैं। लाइक देयर इज नथिंग लाइक रिस्पेक्टेड, ओ सर, दिस सर, मैम, देयर इज नथिंग लाइक यू आर राइटिंग दिस लेटर टू अ फैमिली। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लाइक ऑल दोज कैजुअल पीपल जिनको हम बहुत क्लोज तरीके से जानते हैं।
this is for someone who's very close to us. So we can write dear, we can use dear to him क्योंकि वो लोग हमारे लिए बहुत प्यारे होते हैं. You can loving, very loving, this and that, you can use it. So then straight away you will come to the body of the letter. Here, thank you very much for your last letter. It was great to hear from you after so many months. You seem to be having a nice time in Mumbai. Thanks also for the photographs. I absolutely loved that picture of yours standing in front of the gateway of India. Mumbai looks stunning. Someday I would definitely like to go there. There is not much happening here. I'm busy with the studies and assignments. By the way, are you coming anytime home? If you are, let me know. Hope they know the dates and we can arrange to meet up. Hope to see you soon. So this was the body of the letter, जिसमें बड़े प्यार से उन्होंने सारी चीज़ें कवर की और बहुत short and simple तरीके से उन्होंने letter complete किया. And then last we give a complimentary closing like hope to see you soon and we hope we see each other soon. Like see you, bye, have a lovely time ahead, have a lovely day. ठीक है, and number of things you can add in complimentary closing. And at the very last you will add Aditi, the name of the person who's actually sending the address. So this is the very short and simple informal letter example and format. I hope you would have understood it. Thank you so much for watching the video.